So let us start our new module, that is waves and optics, right? Before starting this module, let me clear a few things for you guys. First thing that this module, pretty sure you can, hello, okay. First of all, this module does not require the completion of mechanics module. Even if you have not completed the mechanics module or have completed it partial, okay, or not started it, please leave that and pay complete attention here. Now, for completing the mechanics topic, please consider this is your first module. Those who have missed the mechanics module, please consider it to be a new module. It is your first module. Okay? Please don't have the FOMO that ki mechanics start hota hai, then waves and optics. Every year ऊपर नीचे स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है? कभी मैं ENM पहले पढ़ाता हूं, कभी TNS, like that only, right? What I want you from is that कि तुम्हारे पास 11th class की एक decent knowledge हो. Apart from that, everything I will be teaching you in the class itself. ठीक है? Anything you want to ask before starting the class? Anything? The class नहीं चल रही, एक मिनट रुक जाओ यार, ये हर बार ऐसा दिक्कत आ जाती है. Give me 1 minute. अरे यार, तुम लोगों को बता तुम्हें कैसे ज्वाइन करना है. Give me a minute. I want you guys कि थोड़ा सा, चलो ठीक है, let's start with this. Yes, I will be sharing everything with you. Okay. Now, although I have told you that this module, let me briefly outline this module for you. Okay. So, waves and optics module, it will be, last year it requires 20 lectures. Okay. So this year also it will be around this much only. 20 lectures, it will be around 20, 21, 22. Because this year again, I am adding few more things according to the pattern, right? So again, and normal the updation process of any teacher. So that's why it can be anywhere around 20 to 22 lecture. There will be almost every year 1 or 2 lecture more than the previous year. Okay. Second thing, let's come to the syllabus of that. So this syllabus comprises of waves, geometrical optics, interference, diffraction, and polarization. If we see the marks distribution, right? If you see the marks distribution, they are pretty much equally distributed between all these following topics, right? Which is more easier in nature. So polarization and modern optics is the easiest among all. It is the easiest among all. Why? Because mostly the question that were asked from these topics were either derivative in nature or it will require a basic formula substitution, right? Simple questions are there. Simple calculations are there. Even the numericals are getting repeated every year. Okay. Now, next come to the interference and diffraction. Again here, you have to have a good conceptual clarity over this thing, because sometimes what happened in interference and diffraction, you might get confused between few topics. Okay, so few topics are confusing nature, but again, it is from the easier point of view, it is the second easier type. Why? Because the question that was asked in the examination, it pretty much predictable. So CDE, just
from the notes, even if you're not practicing many questions, it will be okay. कोई issue नहीं है. Now coming to the geometrical optics. Geometrical optics, laws and reflection from Fermat principle. Again, it is a whatever we'll do in the class, that will be suffice your work. Then matrix method. This thing we have to practice numericals because it is a numerical oriented topic and we have to practice the numerical. Again, the aberration is again the notes. So this topic, from geometrical optics to this polarization, this is the optics part, right? In optics part, only the matrix method and some portion of interference may bother you in numericals. Otherwise, most of the will be derivative in nature. Now, what might haunt you is the waves part, right? So we will be covering waves part in as easy as possible, okay? Covering as many numerical as I can, okay? So it won't be a challenge for you guys. Reflection and refraction from Heisenberg principle. Again, it's a 12th class concept, and we will be dealing with that much level only here, right? Phase and group velocity, बहुत सारे numericals आते हैं. Very important. Most numericals, SHM, damped oscillation, forced oscillation, resonance, beats, all those things we are going to see here. Okay. Now, although I don't recommend any book for this topic, but even if you want to refer any book, I will rather say Brijlal and Subramaniam. Brijlal and Subramaniam for optics part. NK Bajaj for waves and oscillation part. Right? And combinedly, one good book is Ajoy Ghatak. See, I'm just writing for those people जो बार-बार क्लास के बाद ही पूछते रहते हैं कि सर प्लीज कोई तो बुक बता दो आप, ठीक है? तो मैं उनके लिए बस ये लिख रहा हूँ. अदरवाइज इफ यू आर अटेंडिंग माय लेक्चर्स यू वोंट रिक्वायर एनी ऑफ द बुक, ठीक है? दोज हु हैव अटेंडेड द मैकेनिक्स लेक्चर, हैव यू अंडरस्टूड द 90% ऑफ द सिलेबस? यस और नो? ऐसा कहीं लगा कि बहुत टफ हो गया कुछ भी? Again, I want feedback so that I will be improving from the waves and optics part. It was okay now, everyone? Those who have attended the mechanics lecture? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes. So, topic in the complete syllabus. Will be left behind. चलो, और कौन सा क्वेश्चन तुम लोग का? पूछ लो, जो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करने से पहले पूछ लो. सर, how many classes? I have already told you. 2022. और कुछ? Anything else? Anyone want to ask from this topic? Or for one-to-one mentorship call, just message me. I will give you time. Okay? Just message me. I will give you time this week only. Everyone. मैंने बताया था ना कि from today's class, Sunday I will be taking mostly जो भी नए स्टूडेंट आए थे. Done, everyone? Anything to start with this topic? Now, let me tell you one thing. Mostly, 1 or 2 years, UPSC has deviated from this scenario that in section number A, I have already told you that there are 2 sections in UPSC paper, section number A and section number B. Section A and section number B, every paper, let's say for paper number 1, section A, you have mechanics plus waves and optics. Now, I want you guys to make waves and optics and mechanics as powerful as possible. Why? Because in thermodynamics and electricity and magnetism, there are high chances of asking question that will bother you, जो परेशान कर सकता है तुम्हें, ठीक है? So please do that. चलो, let's quickly jump over. The first topic is our SHM. Before starting the SHM or harmonic motion, let us understand few things about the periodic motion. Anyone? What is the periodic motion? देखो भाई, बोलना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ. What is the periodic motion?
Sir, a motion that repeats itself after a particular interval of time, equal interval of time. Okay. So you are saying that a motion repeats itself after an equal interval of time. So let me write this thing, the same thing, that motion repeats itself सर स्क्रीन फ्रीज है आपका। in a fixed in freeze है। Yes, sir. अब देखो, यस सर। ठीक है। तो मोशन रिपीट इटसेल्फ इन अ फिक्स्ड interval of time. This is what you have said. Yes, Avyanshu, correct. Motion which occurs at different interval of time. ठीक है. What comprises motion? When you are saying the motion, what do you understand by motion? What is completing itself? Is it the same velocity, same acceleration, or everything is same? क्या same होगा? Which is repeating? अरे तुम बोल रहे हो ना कि मोशन रिपीट करता है। So after, let's say I am starting from A, after some interval of time I will come to the A, है ना? So again, after coming to A, will my velocity, acceleration, everything will remain constant or it may change? What is repeating actually? Sir, मोशन बहुत बड़ा टर्म है यार। sir, parameter associated to motion like Parameter acceleration, displacement, like velocity. like Sir, acceleration, velocity, displacement. acceleration, velocity, displacement, और सर ट्रैजेक्टरी। trajectory, okay, और अच्छा, let me give you an example. A particle is moving in circular motion and it is a non-uniform circular motion. It is completing its trajectory. बार-बार इसी में घूम रहा है. Can I consider it to be a periodic motion or not? Can I consider it to be a periodic motion or not? Can I consider it to be a periodic motion or not? भाई non-uniform circular motion, periodic or non-periodic? Non-uniform circular motion, periodic or non-periodic? Sir, non-periodic. Why non-periodic? Sir, fixed interval के time बाद नहीं आएगा. Very good. पहले जल्दी जल्दी आ रहा होगा, फिर जल्दी और फिर जल्दी टाइम के बाद समझ आ गया, जाएगा. समझ गया. So motion is basically associated with the trajectory. And this is associated with the time period. So there is two condition. ठीक है? If I am saying a motion is periodic, that means if I am saying that a motion has to be periodic motion, then two condition has to be satisfied. First, in repetition of motion along same trajectory. Repetition of motion along same trajectory. What does it mean? Do we require a loop or not? Is loop necessary or not? Array, if I am saying repetition of a motion in the same trajectory, does
इसका मतलब क्या, लूप में होना चाहिए मोशन? Yes, sir. Yes, sir. आपका Sir, loop in what Arjun sense? is saying no. Circular. हाँ, Sir, loop in what sense? Circular. लूप मतलब सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कमिंग फ्रॉम सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. Yes, sir. So again understand, when I say a loop, ठीक है, loop in physics means same initial and final point. For example, let's talk about the SHM. It need not to be circular motion, but it should be a motion in around a loop. If you consider here, let's say this is my mass M, this is K. What it do? It goes to a level, let's say amplitude, and this is again your amplitude till this position, and it oscillates between that. So if we have to consider time period, it has to be into a loop from here to here, then from here to here. Okay, so motion along a trajectory means that motion considered for one round trip, that is having same initial and final position. Same initial and final position. This is very, very important to understand, that it has to be same initial and final positions. It does not have to move in a circular path or in a curved path. It doesn't mean that. It can be linear. It is what? This motion is a linear motion. Linear motion. But it is having a loop in it. It is having some kind of initial and final position which is coinciding, round trip it is making, right? How it is going on? Because the forces are changing. When it is going here, the forces are applying on the backward direction. When it is compressing, the force will apply on the upward direction. Sorry, forward direction. So whatever the case it may be, the forces might be changing, but this is the case. Clear hai? So periodic motion is such type of motion in which repetition of motion along the same trajectory is important. Need not to be circular, elliptical, but it has to be a round trip. Second thing is that it should have a fixed time period. It should have a fixed time period. Now, we need to understand this thing. This is very important. What does fixed time period means? We can have a time period of different one also. Fixed time period means what? Anyone? That whatever the t, first condition, it should be constant. And you apply both of the thing, I can say that if motion repeats itself, I can say that fx plus t, where t is constant, is equals to fx. T should be constant as well as it should be a real number. It cannot be a complex number. ये आगे समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है? You will be able to find out the t mathematically, but you need to understand that if it has to be real number. And this I call, this is my necessary plus sufficient condition. For a motion has to be periodic, the time period should be constant and it should be a real number. If it is constant, it always follow this one. It will always follow this one. So I can say that the time equals to constant equals to real number. It is a necessary as well as sufficient condition. That's why in the complete scenario, we focus on this part only. Okay. Now coming to this, for example, first example A, let's say uniform circular motion. Is it a periodic motion?
ये तुम लोग को वोकल होना पड़ेगा, ठीक है? Yes, धीरे sir. धीरे आलसी बनते जा रहे हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द पीरियोडिक मोशन। यस। Yes, sir. Yes, sir. Is it a periodic motion, non uniform? No. We can check it. We can check both of them. Two parameters are there. भाई मेरे पास ये है, सर्कुलर मोशन में ये किसी डिस्टेंस पे होगा इधर, और ये गोल गोल घूमेगा। गोल गोल घूमेगा इन द सेंस दैट इट इज मूविंग वेयर v is constant. So after one revolution, it will come back to this one. That means the first condition that if I write here repetition of trajectory, and second one is fixed time period. ये दो केसेस है दोनों में। टेल मी दिस थिंग। Non-uniform, v is not constant. Can I say that in both of the cases, yes, repetition of trajectory is possible? अरे दोनों में भाई गोल गोल घूम कर आएगा, इसमें भी गोल गोल घूम कर आएगा, इसमें भी गोल गोल घूम कर आएगा। टाइम पीरियड, is it fixed or not? Yes. Why? Because t is equals to 2 pi r by v. अरे जैसे ही बोला सर्कुलर r is fixed, जैसे ही बोला यूनिफॉर्म v is fixed, तो 2 pi r by v is fixed. Here, is it fixed? No. This v is changing, so it is equals to 2 pi r by v, but this v is changing now, so t will change. So here t is equals to constant, but here t depends upon 1 by v. If you increase the v, the t will decrease. That means if you increase the v, t will decrease. If you decrease the t, v will increase, right? So you need to understand that if I'm telling that it is a periodic or not, this is what I mean by that thing. ठीक है? Next one, one more example. Or a question. Can oscillation takes place in a damping medium? A damping, we will discuss it later. अभी पढ़ेंगे हम लोग, बट थोड़ा बहुत तो आइडिया सबको होगा डैम्पिंग मोशन, डैम्पिंग मीडियम। लेट्स से देखो, instead of air, what I have this liquid, let's say, and in this liquid I have the system, spring and mass system. So what will happen here? The liquid will start damping the motion. Damping मतलब drag force, friction force, viscous force, whatever you want to understand. Damping मतलब मोशन को कम करना स्टार्ट करेगा, है ना? पहले अगर बात करें एम्पलीट्यूड की, कि अगर पहले ये जाता था इतना नीचे और इतना ऊपर, तो आफ्टर दैट ये डैम्पिंग थोड़ा सा कम होगा, फिर और कम होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे इट माइट स्टॉप. Can oscillation takes place in damping medium, or can periodic motion, better to say, अभी periodic पढ़ रहे हैं हम लोग. Can periodic motion takes place? Yes, no? ये आंसर चाहिए मुझे. No, Can it sir. takes? हाँ? How many say yes? And how many say no? How many say yes or no?
अरे how many of you say no? बोल मेरे भाई। No, 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 साइन वेव, no, 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस कौन बोल रहा था भाई? कौन है वो मूर्ख व्यक्ति जिसने यस बोला है? हु सेड यस? हाथ उठा दो यार। हु सेड यस? एटलीस्ट हैव द करेज। हु सेड यस? आई थिंक विवाद है सेड, है ना? No, sir. I said no. ओके, पुबली, पुबली। Sir, trajectory repeats here. T will be T will be I've constant. already told you that which is the necessary as a sufficient condition. Time period is real constant. It is the only thing that we have to see. This thing all will follow. I have just explained that what is repetition of motion means. That repetition along the trajectory. What is the necessary as a sufficient condition? That t is constant. बस अगर t constant मिल गया काम बन गया अपना. Probably was right. Yes. And we call this as damped harmonic motion. अभी पढ़ेंगे हम लोग, and I will show you. Yes, it can happen. What we have to focus upon? We have to only focus upon the time period is small. Here, what happened? Trajectory repeats. Second one, t will be constant and real. I will show you. अभी पढ़ेंगे time oscillation. What is decreasing? Amplitude, velocity, and energy decreases. And energy decreases. So it is possible in even in damped oscillation. How it is possible? जब हम लोग damped oscillation पढ़ेंगे तो then you will understand. ठीक है? Now you can write one thing here that if Sir. Sir, trajectory repeats मतलब same initial and final position नहीं होना चाहिए. हाँ तो सर इसमें कहाँ होता है same initial and final? मतलब amplitude तो ऐसे. हाँ, amplitude decreasing मतलब motion remains same. Trajectory means motion. समझ गया सर. Trajectory is not only about the length. जैसे अगर ये ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है तो अभी ऊपर नीचे करेगा, ठीक है? ऐसे ऐसे करेगा, कम होता जाएगा, ये सुनो. बट द मोशन विल रिमेन सेम. Yes, sir. ओके, ठीक है सर टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा? हाँ, नहीं सर, पहले जितना हाइट पे जा रहा था और ऊपर भी पहले जितना हाइट पे जा रहा था, फिर टाइम सेम दूसरे लगेगा. केस टाइम में सेम कम हाइट पे लगेगा. जा रहा था. टाइम सेम लगेगा मेरे भाई. अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को. यही बोल रहे हो ना कि पहले तो सर यहाँ से स्प्रिंग थी, यहाँ से हमने छोड़ा तो पहले ये यहाँ गया फिर यहाँ गया, अब तो इससे पहले ही रुक जाएगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम. यही बोल रहे हो ना? सर वेलोसिटी भी क्योंकि चेंज हो रही है. हाँ, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज होगा. टाइम एंड कांस्टेंट आएगा. इंतजार तो करो, आएगा. आई एम जस्ट टेलिंग, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. वेयर इट इज पॉसिबल? व्हेन वी विल स्टडी द डैम्ड हार्मोनिक मोशन. शायद आज ही पढ़ ले हम लोग, ठीक है? आई विल शो यू द केस वेयर इट इज हैपनिंग. अरे मुझे तो बस यही प्रूफ करना है ना. इट इज द ओनली सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन. यस और नो? रेस्ट ऑफ द थिंग इज जस्ट द क्या बोलते हैं उसका, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स. यस और नो? Only thing that is deciding whether it is periodic or not is what? The time period should be constant and real. Yes or no? अरे बाकी सब तो आसपास की चीजें हैं, प्रॉपर्टीज है कि ट्रांजिटिव रिपीट करे ना करे. इवन इफ ट्रांजिटिव विल नॉट रिपीट, we will consider it to be a
पीरियोडिक मोशन, इंपॉर्टेंट की टाइम पीरियड आना चाहिए, यू विल सी दैट। चलो देखते हैं। राइट डाउन, इफ नो डैम्पिंग by the medium, if there is no damping by the medium or dissipation of energy, जब वो डैम्प करता है तो उसकी एनर्जी को खा जाता है। आई विल शो यू हाउ by the system, then the object will have same state after every time period, after every t. What is same? What is state? Anyone? What is state? What is state of the system? सर उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी और acceleration, everything, overall information। ये और भी डिटेल में पढ़ोगे पेपर नंबर 2 में, बट अभी समझ लो अबाउट दैट बॉडी, ओवरऑल इंफॉर्मेशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, एवरी इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली नोन एज स्टेट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रोटेटरी मोशन, है ना। तो स्टेट सिंपली मींस दैट ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना मानोगे। ठीक है, सो आई एम सेइंग दैट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, एवरीथिंग विल रिमेन सेम if no damping force acting on that system. Now, one case of periodic motion is what we known as oscillatory motion. Or oscillations. Oscillations are also known as harmonic motion. Oscillation बोलो या harmonic motion बोलो, but is same. Now I'm not saying simple harmonic motion. I am dealing about the harmonic motion, right? So what is harmonic motion? Anyone? Sir, to and fro motion about the mean position. Yes, very good. So बचपन से पढ़ते आ रहे हो चीज, टू एंड फ्रो मोशन। व्हाट इज टू एंड फ्रो? टू एंड फ्रो मोशन इज व्हाट? अबाउट द मीन पोजीशन। True and fro motion about the mean position. What is true and fro motion? Anyone? सर आगे पीछे। Yes. आगे आगे उसका पीछे। एक कोई पॉइंट होगा, इसके आगे जाना, फिर इसके पीछे आना, फिर आगे जाना, फिर पीछे आना। एग्जांपल बताओ। पेंडुलम, स्प्रिंग मोशन, ये देखा है स्विंग ऐसा वाला झूला, अरे जो लगाते हैं यार ऐसा वाला, स्विंग ही तो कहते हैं इसको, स्विंग। और कुछ? सो टू एंड फ्रो मोशन इज going across both externalities about a point. ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, always involve at least two direction. डायमेंशन, मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं, पॉजिटिव एक्स, एग्जांपल पॉजिटिव एक्स एंड माइनस एक्स,
It might be 3D also. I'm not focusing upon that thing, but it is the thing, to and fro motion. Okay. For example, if you have a pendulum, okay, it is my pendulum. So pendulum can go ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे जा सकता है. So what is pendulum is doing? ऐसे ऐसे जा रहा है. So it is what about this position? It is going to and fro, to and fro. This is what happening. ठीक है? So this is what I mean by to and fro. Next thing is about the mean position. About the mean position. What is mean position? What is mean position? Sir, position where the object is at its minimum energy equilibrium. Where we have equilibrium. Where we have equilibrium. ठीक है? That means F net is 0. And tau net is 0. Net force is also 0. Net torque is also 0. Then we can say that it can be at equilibrium. So all equilibrium can be mean position. Yes. So mean position is my equilibrium. Okay. Now you need to understand. एक एग्जांपल और लिख लो जो ऑसिलेशन का है. दैट इज योर इसका नाम क्या है? एनीवन? स्प्रिंग मास सिस्टम. आज से इसको पढ़ोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर. क्या पढ़ोगे नाम? हार्मोनिक ऑसिलेटर. यस, इट इज आवर स्प्रिंग मास सिस्टम ओनली, बट अब तुम लोग बड़े हो गए हो, यू विल से इट हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है? इट इज स्प्रिंग मास सिस्टम. नाउ one thing you should note here, that for a motion, सुनना अच्छे से, for a periodic motion, to be an oscillatory motion, for a periodic motion to be an oscillatory motion, mean position must be stable equilibrium. Not only equilibrium. And the mean position is said that anything which is at equilibrium. What is a stable equilibrium? What is stable equilibrium? Stable equilibrium is such when a restoring force acts. Restoring force acts, bringing back particle to mean position, to its mean position. I hope you guys know these things from your junior classes. कि what do you mean by stable equilibrium? What do you mean by unstable equilibrium? Anyone? सबको पता है ये चीजें? Are yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Still, it's my duty to tell you guys, है ना? So let's say if this is potential function ux and x, ठीक है? If it is ux and x, and if we are drawing, let's say this is the potential energy function. Tell me, if I have a particle here, if I have a particle here, here, and here, I will also write in the mathematical part, but just tell me one thing. If I displace here,
where the force will act, where the particle will go, where the force will act. Same direction, force will act also. Yes or no? And जैसे ही Yes, तुम sir. इसको यहाँ से डिस्प्लेस करोगे, ये ऐसे गिर जाएगा, fall out. It is intuitive, है ना? Same goes with this direction also. If you fall x here, force will also fall. So this point, let's say 1. This point, I call it as unstable equilibrium. Achha, what is for equilibrium? If I'm saying equilibrium means, just tell me. If I'm saying equilibrium, that means it will hold for all of them. And here, what will happen? dux by dx, force, it will be 0. Yes or no? So for all these points, it will be 0. But for unstable, it is that acting at maxima. What will happen? du upon dx square is less than 0. Please remember this thing, that for unstable equilibrium, this will happen, and it is coming from the maxima itself. बहुत आसान सा चीज है. Now what will happen here? If you move this, it will move along this one. It will move here, it will move along this one. ठीक है? So इसमें क्या हो रहा है? जितना तुम मूव करोगे उतना ही आगे जा रहा है, right? इसमें क्या हो रहा है? Small displacement, force is changing it towards the other end. So this we called as neutral equilibrium. Neutral equilibrium. Just for your knowledge, I am teaching you these things. I know ये तुम्हें पता होगा सब चीज. Listen, that is d square u upon dx square. That is d square u upon dx square is equals to 0. I hope you guys know these things. Just I'm making the revision. But what will happen here? If you push it x here, force will bring down back. If you push it here, force will bring down back. This is what is happening, and it will be happening across the stable equilibrium. This is what I'm saying, that if it has to be an oscillatory motion, it has the quality to bringing back the particle. And when there's stable equilibrium, this is what we have to understand, that d square u upon dx square, it is the minima. That's when it is greater than 0. It is greater than 0. One more example I'm giving you, that let's say this is my spring block system. This is the length L. Natural length पे है ये. Now this is mass M. Let's color it. हो गया सुंदर, ठीक है. Not two cases I'm writing here. Let's say this block has displaced itself and has come here. And in this case, this block displaces itself and come here. This is the displacement. This is the displacement. Can you tell me where the force will act here? In the first case, where the force will act? Positive x or negative x? In the first case? Negative. Negative. In this direction, the force will act, and this is what we mean by restoring. Restoring means what? It is restoring its original position. ये यहाँ से भाग कर गया, इसको वापस कैद में लेकर आ गए, right? This is what restoring means. Here, it will be in this direction. Why? So see, are you understanding this thing? Force might change its direction alternatively, whatever it has to take place. What condition has to be fulfilled? This condition has to be fulfilled, that it has to be in equilibrium position, right? I hope you get it. So next thing, if F is restoring, F restoring simply means that whenever you will make any displacement, it will be odd number, minus x. Force will be always acting negative to the direction. ठीक है? Odd, why? Why odd?
Why odd only? अरे इवन होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। इवन होगा तो f कैन नॉट बी रीस्टोरिंग। f रीस्टोरिंग कब है? कि तुम जाओगे x पॉजिटिव में तो f लगेगा तुम पे नेगेटिव में, तभी तो रीस्टोरिंग है। तुम जिधर जाओगे तुम्हारे अपोजिट लगेगा। सो इफ इट हैज टू बी रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग मीन्स व्हाट? एक्टिंग अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। जब भी तुम डिस्प्लेस कर रहे हो, इट इज एक्टिंग अपोजिट। नो, इफ x टू द पावर इवन विल बी देयर, अगर x इवन हो जाता, x टू पावर इवन, then what will happen? Force will be always minus. No matter what is the sign of x, the force will be always acting in same direction. Yes or no? Arey, yes, no, everyone, please tell me. हाँ सर। This is what is happening here. Now, from here you can understand, if x is positive, so f क्या है? Negative. From here also you can say that if f is negative, तो देखो अच्छे से, x negative power odd, it will give minus outside, minus minus will become plus and f will be positive. ठीक है? Now we can write here, when odd power becomes 1, we call it as simple harmonic motion. अरे सिंपल क्यों सिंपल? क्योंकि उसके पावर पे क्या है? ऑड। ऑड की पावर मिनिमम कितनी हो सकती है? सिंपलेस्ट मोशन, दैट इज 1। ठीक है? सो वी विल अंडरस्टैंड द केस ऑफ, यहां सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है। इससे पहले जो भी था दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ please understand, simple harmonic motion in itself is a very very long topic. If you have prepared for JE or for the 11th class, you see it is a very very long topic to cover. Do we have to cover in that length and breadth? No. Whatever is required, I will be covering in the lecture itself. There are few questions that you should not attempt from the NCERT. ठीक है? What you will be doing, I have already told you, प्लीज रेफर टू दी एनसीईआरटीज, है ना? एक बार उसको रीड जरूर कर लेना, एंड जो भी एग्जांपल वाले क्वेश्चंस है उसको देख लेना, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है? व्हाटएवर इज रेस्ट आई विल बी टीचिंग इन द क्लास। सो व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन वी कॉल्ड दिस एज फ्री ऑसिलेशन। Free oscillation simply means that no damping. No damping means no energy dissipated. If no energy is dissipated, can I say that mechanical energy is conserved? No energy dissipated, that means mechanical energy is conserved. अच्छा, one thing between the टॉपिक में बोल रहा हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आई प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। ठीक है? प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्लीज यूज द बेनिफिट ऑफ हैविंग द लाइव क्लासेस। ठीक है? सो इट इज मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. So can I say that simple harmonic motion is also acting as a conservative system? Spring mass system लिखा था हमने पहले भी, so it is a conservative system. First thing. Second thing, that F is equals to F proportional to minus X. So we can say that if it is a condition of simple harmonic motion, acceleration must be proportional to X. Acceleration must be proportional to X, right? What we do sometimes, सुनना अच्छे से, sometimes we make like something like that.
that A is equals to minus omega square x. A is equals to minus omega square x. Now from this one only, you will be understanding that omega square has to be constant. Basically, we define time period t is equals to 2 pi by omega. This is what we define, right? If you can write any system like this, अगर तुम किसी भी system को a equals to minus omega square के form में लिख दो, so we can find out the time period of that system. That is 2 pi by omega. This is the condition for SHM. This is again the necessary plus sufficient condition of SHM. ठीक है? Also, if torque is acting, ठीक है? If restoring torque is acting, then what we can say? ये तो फोर्स की बातें थी. If restoring torque is acting, what you can say? Alpha equals to minus omega square x. समझ में आ रहा है? If restoring force is acting, this is what? This is my restoring force. Instead of force, like in pendulum net force was 0. Sorry, net force is not restoring, rather the torque is restoring. So if restoring torque is there, then we can apply alpha is equals to minus omega square x. ठीक है? What are the some example of this? सर हाँ. सर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नहीं होना चाहिए? Sorry, yes. Angular displacement. Correct. So angular acceleration is equals to minus omega square angular displacement. Harmonic oscillator, pendulums. Third, U-tube fluid. Fourth, LC oscillation. सुना है? So understand, there can be different type of oscillation. There can be different types of oscillations. ठीक है? You will encounter in electricity and magnetism. You have studied in your junior classes LC oscillation. Here oscillation of current takes place, energy are taking place. Harmonic oscillator, how we do that? A spring mass system जो बनाया था हमने. This is my harmonic oscillator. Here also what? Displacement is changing. Pendulum, you know that. Pendulum is what? Doing like this. Swinging around. Here also it is moving around this. U-tube fluid, like if you have a small fluid like this, U-shaped tube, and if you fill with water, if you fill with some water, right? What will is happening? That this water will go down, and here it will go up. Again, it will go down, it will go up. Something like that. Again, in the earth system, it do like that. Here also, what is happening? Like inductor is there, capacitor is there, right? All this we will see one by one. What is happening? The energy is converting into between the electric field and between the magnetic field. That you have seen in the junior classes. Okay, these all type of harmonic oscillations. सर ये यूट्यूब फ्लूइड वाला कैसे होता है सर रीस्टोरिंग? ये कभी नहीं देखा. ये नहीं देखा? नहीं, थोड़ा सा पतला ट्यूब होता है, उसमें हम लोग वाटर फिल कर देते हैं एंड देन थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हैं. ठीक है, तो दिखा जाता है कि ये जो फ्लूइड है ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है. सर ये फिर उसमें नहीं, मतलब स्टेबल कंडीशन अटेंड नहीं करता? करने के बाद ही होता है भाई. ऑसिलेशन इज अटेन्ड बाय स्टेबल कंडीशन. अलोंग दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेशन होती है. ठीक है, जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है, सुनो अच्छे से,
अभी अच्छा, अभी मैं आ ही रहा था इस चीज पे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, देन इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ठीक है। कमिंग टू दैट, हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। This is the classical case of harmonic oscillator. We have harmonic oscillator in quantum mechanics as well, paper number 2 also. So whatever the property we are studying here, we will again see this property in paper number 2, but again only the property I will be writing, not explaining this thing in detail. So please understand that. Okay? So first understand what is my harmonic oscillator. Already मैंने बना रखा है ऊपर. This is my harmonic oscillator. Mass M. देखना. This is my harmonic oscillator. It is fixed with this end, right? We have a spring having natural length L and coefficient spring constant K, which is its rigidity, coefficient of rigidity of spring. Now Piyush was asking, sir, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो कैसे वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर माय rigid support and this is frictionless. There is no damping of thing. Now, first thing you should understand here that no damping here in medium, कोई भी dissipation of energy नहीं हो रही है, ठीक है। Second, spring force act only if its natural length is disturbed. अरे spring you have seen that ना, spring के बाद कुछ natural length भी तो होती है, हमेशा oscillate थोड़ी करता है। When the spring will oscillate, when you will change its natural length, yes or no? ये सबको पता नहीं पता है। स्प्रिंग बिना ऑसिलेट किए भी रहता है नेचर में, हैव यू सीन दैट? यस और नो? Yes. When it will be oscillate? Yes, sir. When is natural displacement? So for oscillation, how oscillation starts? Oscillation starts when the object is displaced by small distance x from its stable equilibrium. Now understand this thing, that I am telling you that I am just छोटा the distance x, I am displacing it here. Just small displacement. I will tell you the reason of everything. First thing, that we are displacing it from the stable equilibrium. Stable equilibrium means that at this position it is in equilibrium. ऊपर normal, नीचे mg, कोई मतलब नहीं है. Stable equilibrium is in direction of x only. Stable equilibrium is achieved in direction of x only. Why? Because when you displace it in right, a force will act on the left to restore its position. When you displace it in the left, a right force F will act to displace it on the mean position. So understand this thing. Let's say if this is the mean position from where it has displaced, obviously, right? So this is the position of stable equilibrium only. ये समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, फिर वहां से डिस्प्लेस करेंगे तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? यस सर। लेकिन सर वो ट्यूब वाले केस में
हाँ सर स्प्रिंग जैसा कौन करेगा, मतलब वो वो तो हाँ सर मैं हाँ मतलब ये बोल रहा हूँ, पानी सर बराबर लेवल पे आने के बाद रुक ही जाएगा ना। नहीं नहीं रुकता है, प्रेशर डिफरेंस वो मेंटेन रहता है वो चीज। ये सर जैसे स्पेशल यूट्यूब रहता होगा ना कोई। हाँ हाँ स्पेशल टूल होता है भाई, मैंने ये सिर्फ एग्जांपल बोला है, प्लीज स्टक मत करो इन चीजों पे, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, if you write a harmonic oscillator pendulum as solution, that will be okay, just how it do, we should not go into these things, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि अर्थ के अंदर एक डिग करके डाल देते हैं, उसमें भी ऑसिलेट करता है, ये बहुत सारा एग्जांपल है, तो जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। व्हाट यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस हियर, यहाँ पे एक छोटी चीज पे पूछो क्वेश्चन, दैट विल वर्क, ठीक है, दैट विल बी more important thing to us. So first thing is why small displacement only. I am asking you that why small displacement only. Why small displacement? And how small? First, you need to understand that we have studied in our junior classes about Hooke's law. Every material has a tendency, okay, to increase or decrease its length. So, to be in elastic limit, to be in elastic limit, F is equals to minus kx. ये तो पता है, it is my Hooke's law. Right? It is what? It is the Hooke's law. And Hooke said this thing for small displacement only, that as long as the object is in under the elastic limit, याद है ये चीज stress strain curve पढ़ा भी था, like this, yes or no? This is the proportional limit. As long as the displacement is small, it is able to regain its shape. मान लो, let's say its natural length is L. So if you displace it by a small margin, it will be able to come back. But अगर तुम उसको बहुत लंबा खींच दो, ये वापस आ पाएगा? Just try with any spring. If you are elongating spring too much, then its length, उस L का 2L कर दो, देखो spring will not oscillate. ठीक है? So first thing that it should be inside that. Second thing is you to understand that K is known as spring constant. And it is 1 by L, length of the spring. Smaller the length, higher will be the spring constant, and it is the property of the material. Property of material of spring. Next, if I am saying small with respect to natural length. Small with respect to the natural length of the spring. This is what we are telling. Okay. So what is the force acting here? What were the force acting here? That is equals to minus kx. That is under our Hooke's law. I hope everybody know this thing. Yes or no? क्या सबको पता है इतनी बातें? Can you move ahead? Everyone agree with these things? अरे displacement is small as compared to its natural length, ठीक है? Now coming to the derivation part. Yes, कुछ बोल रहे हो? कुछ बोलो तो बताओ. Can I write F is equals to ma? And F is equals to ma को लिख सकते हैं हम लोग m into dx square by dt is equals to kx. भाई जो हमने ऊपर पढ़ा है dx square x by dt square is equals to minus k by m into x.
अरे इज इट रिजेंबलिंग टू, यस और नो? क्या ये रिजेंबल कर रहा है इससे? एवरीवन, अगर k बाई m को ओमेगा स्क्वायर मान ले तो रिजेंबल कर रहा है, यस और नो? दैट मींस इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो हाउ वी राइट इट? Sir, वी राइट sir, you have written there m minus km. Then it should be minus kx, I guess. f equals to minus kx, yes. So d square x upon dt square plus omega square x is equals to 0. Now, this is called my equation of motion of simple harmonic motion or differential equation for SHM. ठीक है? और you can write this is nothing but differential equation obviously. What type of equation? Equation of motion. Of SHM, simple harmonic motion, or sometimes we call it as free oscillation. Here we have assumed that omega is equals to root under k by m. If omega is equals to k by m, what is time period? 2 pi by omega. So it will be 2 pi root under m by k. It will be 2 pi root under m by k. ठीक है ना? So now you need to understand now let's understand a few things. What is oscillating here? What is oscillating? In above equation, anyone? क्या टू एंड फ्रो कर रहा है? What is oscillating? Sir, position. Very good. So here oscillation of x, which is not position but the displacement. ठीक है? Now if x is charge, then what will happen? Oscillation in charge. If x is electric field E, देखो मैं अभी सिखा रहा हूं ये सारी चीजें throughout the paper, it will help you. Then there will be the oscillation in electric field. अरे चार्ज लॉ कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, yes or no? Where? Oscillation of charge, where you studied? Sir, capacitors. LC oscillation, yes or no? Capacitors, oscillation of electric field, electromagnetic wave, EM waves, all these things in our syllabus only. ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं बाहर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? Now, if you wish, you can find out the general solution, ठीक है? But you need not to do that, ठीक है? We pretty much accept this thing that all of you can find out their general solution, or as the part of class 11 mechanics. So no one is expecting you to solve this equation. The general solution of this equation, again by assuming it, you can do this. So it is equals to xt. X will be function of t. I can write it as c e to the power I omega t. मैंने पहले भी बताया है in mechanics. Even if you are not studied, please understand this thing. We can write like this, or which is equals to a sin, ये तो सबने पढ़ा होगा, sin omega t plus a sin omega t plus phi, where phi is my initial condition.
where phi depends upon my initial condition. So this will be the solution of above equation. If you write above equation, this will be can be the possible solution of that. Okay, when we will be using the exponential part, when we will be using the sine part, when we'll be using your cos part, how we can understand? What is the rationale behind using the exponential form or sine form or sometimes cos form? बताओ क्या rationale है? What is the rationale behind it? Reducing calculation. Very good. जिससे जल्दी बन जाएगा, जिससे कम मेहनत लगेगा, वो यूज करेंगे उसमें. ठीक है. अच्छा, few points I want to add here. ठीक है. Can you tell me what is e to the power minus I theta can be written as? Sir, cos theta plus iota sin theta. Cos theta plus iota sin theta, because this will be now, you have to keep it handy. E to the power minus I theta cos theta plus, sorry, minus iota sin theta. So using this, can you even tell me what will be the value of cos theta and sin theta? Value of cos theta and sin theta in terms of e theta? Can I write cos theta is equal to e to the power I theta plus e to the power minus I theta divided by 2? And what is sin theta? बताओ बताओ. मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं तुम लोगों से, बस ओनली टू रिवाइज माय नोट्स. ठीक है. व्हाट इज रिलेवेंट आई विल बी राइटिंग हियर ओनली. बताओ बताओ जल्दी बताओ. sin theta equals to e to the power I theta minus e to the power I minus I theta by 2i. very good. E to the power I theta minus e to the power minus I theta divided by 2i. Very very good. अच्छा, what is the expansion of e to the power theta? e to the power theta को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वो expansion भी बढ़ाना है. Sometimes expansions are easier to solve few questions. Where expansions are helpful? एक चीज दिखना भूल गया मैं यहाँ पर, रुक जाओ. नोट लिख लो. Always displace the object or block or mass for finding time period. For finding time period. Not the spring. Not the spring. ठीक है. क्वेश्चन में समझ में आएगा तुम्हें. अभी लिख लो. ठीक है. तो ऑलवेज डिस्प्लेस द मास. ऐसा नहीं कि अगर किसी क्वेश्चन में आया तो लेट द स्प्रिंग इज डिस्प्लेस बाय एक्स. नहीं, यहां पर स्प्रिंग डिस्प्लेस कितने से कर रहा है? एक्स से. इसलिए नहीं कि हमने स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया है, इसलिए क्योंकि हमने मास को डिस्प्लेस किया है एक्स से. राइट. दिस यू टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डिस्प्लेसिंग मास बाय एक्स. Yes, consequently, displacement of spring is also x, but initially we have displaced the spring only, mass only. So can I write it as it is equals to 1 plus, बताओ. Sir, x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial. Okay. So 1 plus theta square by 2 factorial plus theta square, sorry, theta cube by 3 factorial plus theta 4 by 4 factorial and so on. And why I'm telling you this thing, क्योंकि कई बार एक्सपेंशन आता है, बच्चे पूछते परेशान जाते हैं. तो इट्स बेटर कि पहले ही परेशानी खत्म कर दो. आई होप सब लोग, कुछ लोग पता है तो वो बताएंगे मुझे आंसर. ई टू माइनस ई थीटा कितना आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी. Sir, 1 minus theta plus theta square by 2 minus theta cube by 3 with 3 factorial. ऐसे कैसे? तो 1 minus theta plus theta square by 2 factorial
माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाई 4 factorial and so on. Can anyone tell me the nature of this? What is the nature of this? What is the nature of this? सबका काम आएगा। मैं देखो भाई, मैं बहुत ही आलसी इंसान हूं, ठीक है, मैं कुछ भी बिना मतलब का नहीं पढ़ाता, बट हाँ मेरे साथ ये भी चीज है कि मुझे बेस भी देखना है तुम्हें, मैं चीजें उड़ाता नहीं हूँ। अरे भाई, दिस इज, कैन आई से दैट इट इज एक्सपोनेंशियली, व्हाट, एक्सपोनेंशियली, बोलो बोलो। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग भाई, वैल्यू पुट करके देख लो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। हाउ वी मेड द ग्राफ, वी मेड दिस ग्राफ समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसे ग्राफ बनाते हैं, एकदम माइन्यूट ग्राफ, ये सब चीजें याद रखोगे, समथिंग लाइक दिस, किसी एक वैल्यू से ऐसे बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। नीचे वाला डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग सबको फील आ रहा है ना? हाउ व्हाई इट इज डिक्रीजिंग? So it is something like this graph. Now understand this thing. Understand this very very importantly, that you should have a feel कि ये exponentially decrease कर रहा है. How we know that? Whatever the value will put, देखो 1 minus theta plus theta square by 2 minus theta cube by 2, समझ में आ रहा है? तो always higher power is in minus, हमेशा higher power will be in minus. So overall it is exponentially decaying. अच्छा, e to the power I theta, बताओ क्या आएगा? What is e to the power I theta? अरे can I write it to be 1 plus I theta, 1 plus I theta, बताओ, प्लस I स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये याद होना चाहिए भाइयों, I क्यूब थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, I 4 बाई थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल। कैन आई राइट इट? यस, दैट इज 1 प्लस I थीटा, ये तो I स्क्वायर माइनस हो गया। अरे I पता है सबको ना, व्हाट इज I? व्हाट इज I? I is iota, root minus 1. वेरी गुड। सो ये सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे? हाँ सही है। माइनस आई क्यूब इज व्हाट? माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आई 4 is now 1, so theta 4 by 4 factorial and so on. So if you write or if you club all of them I cap वालों में, so it is coming out like this, that is 1 minus theta square 2 factorial plus next हो जाएगा theta 4 by 4 factorial minus theta 6 by 6 factorial plus I into theta minus theta cube by 3 factorial plus theta 5 by 5 factorial and so on. क्या इसको लिखते हैं हम लोग? इस पूरे को प्यार से हम लिखते हैं, बताओ क्या लिखते हैं? cos theta. cos theta plus I, इस पूरे को प्यार से क्या लिखते हैं हम लोग? sin theta. So if I ask you what is the nature of this, what is the nature of this, you will say it is a sinusoidal function. It is a sinusoidal function, right? Sinusoidal function means इधर अगर साइन होगा तो ऐसे, या cos होगा तो ऐसे,
Sin and cos, only the phase is changing, nothing more than that. I can say that sin function, that means it is what? Oscillatory in nature. Oscillatory in nature. Bhai, this is very, very important point that I'm making here. So if I can prove it to be a sinusoidal function, अगर मैं किसी भी चीज को sinusoidal proof कर दूं, दिख रहा तुम्हें, periodic and this oscillatory in nature, time will become fixed. So e to power I theta. अब now understand this thing. E to power I, अगर मान लो किसी इक्वेशन में यहां पर I नहीं हो, माइनस I नहीं हो, सिर्फ ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी हो, let's say x is equals to e to the power omega t plus let's say b e to the power minus omega t, ये कैसा फंक्शन होगा? Will it be oscillatory or not? Will it be oscillatory or not? No. ठीक है. So to judge whether it is oscillatory, एक तो sin और cos है या नहीं है, and second is exponential में iota वाला. These are very basic but important to understand. Now coming to this portion, that x is equals to a sin omega t plus phi. This is what we have understood till now. ये हमारा इक्वेशन आया है अभी हमारे पास. ठीक है. This is the equation for SHM. This is the simplest case that we will take normally for writing anything, right? What does this mean? That here, what is x? What is x? It is my displacement at any time. What is A? A is called amplitude. What is the amplitude? Amplitude is maximum displacement. Maximum displacement. साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1. तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1. तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? A. It is the maximum displacement, right? Now what this together we call it as? This is we call it as phase. This we call it as phase. ठीक है. Now here omega we call it as 2 pi f or 2 pi by t. 2 pi f or 2 pi by t, where this is my angular frequency. Write a note everyone. मैं notes में नहीं लिख पाऊंगा, चेक लिख ही देता हूँ. F is frequency and t is my time period. लिख लो notes में क्या लिखो. Sometimes what happen, we are having a habit of writing omega in every equation. ये हमारी हैबिट होती है कि हम हर बार ओमेगा लिख रहे हैं. एग्जाम में दिया जाता है फ्रीक्वेंसी. सो कई बार फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में दिक्कत हो जाती है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, दी फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट. 2 पाई का है डिफरेंस उनमें. So please try to understand what is frequency. How we define frequency? Frequency is defined as number of oscillations. मतलब number of oscillation means how many number of to and fro motions it is doing in 1 second. It is the number of oscillation it is doing in 1 second. ठीक है. This is my omega. Second one जो phase के अंदर था, that is phi. Phi, it is my initial phase. Phase is basically a condition. क्या है ये? It is the initial condition. So it depends upon initial condition. That initial condition means that t equals to 0 पर क्या था? Initial condition simply means that its state at t equals to 0. If 2 equals to 0, the x was 0, phi will be 0. That's all. Everyone clear है यहाँ तक?
यस नो? यस सर। हार्मोनिक ऑसिलेशन एसएचएम, ठीक है, ये तुम लोग पढ़ भी रख चुके हो यार पहले से बचपन में, so it is kind of revision for you guys. Velocity in SHM, or not velocity in SHM, speed in SHM, better to say speed in SHM. Velocity क्या है? Velocity changing with respect to time. Speed in SHM. So I know that A is equals to minus omega square x. So I will be using A is nothing but V into dV by dx is equals to minus omega square into x. Again, V into dV is equals to minus omega square x into dx. So let me tell you here that what is where the velocity will be zero. Where the velocity will be zero. Mean position. Mean position velocity zero होगी. Sir, मैक्सिमम amplitude एक्सट्रीम पे. Sorry, extreme पे, sorry, extreme पे, sorry. Very good. So yes, चलो जिनको नहीं पता है वो एक बार देख भी लो. It is at mean position. We know that energy is written as, पता ही थोड़ा सबको, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. किसी को नहीं पता तो मुझे बताओ. फ्रॉम द जूनियर क्लासेस फ्रॉम क्लास 11th कैन एट एनी टाइम, ये सबको पता है ना कि एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इज रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक, और पोटेंशियल होगी हाफ के एक्स स्क्वायर अगर के इसकी वैल्यू है. यस और नो एवरीवन? बोलो भाई. यस Yes, नो? sir. दिस इज माय मीन पोजीशन एंड दिस इज माय एक्सट्रीम पोजीशंस. एक्सट्रीम मींस जहां ये मैक्सिमम जा सकता है, जहां पर ये मैक्सिमम जा सकता है. मैक्सिमम तो ये ए जा सकता है, थोड़ा छोटा बन गया फिगर, मैनेज कर लो भाई. मैक्सिमम तो ये ए जा सकता है. मुझे एक बात बताओ, यहां पर इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर. एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी हियर? भाई दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, इसके बाद उसको वापस आना है. सो हियर इट हैज टू बी जीरो, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो हियर. Kinetic energy zero means velocity will be zero here. And at mean position, what will happen? Same goes with this extreme position also. इस वाले extreme position पे भी same लिख सकते हैं हम लोग. यहाँ क्या लिख सकते हैं? Mean position में I can write that कि PE is zero. भाई x no displacement, but kinetic energy is half mv square. That is the maximum velocity it can attain. So from here, I would be writing like that, that integration from 0 to dv is equals to minus omega square x into dx. Let's say velocity is 0 to v, 0 से v जा रहा है. So where the x will be moving? X will be moving from a to x. 0 कहाँ पर है? जहाँ पर उसकी एम्पलीट्यूड x की वैल्यू कितनी है? a. Integrated, so it will become v square by 2 is equals to minus omega square x square by 2 x square minus a square. ठीक है, रीअरेंज दिस थिंग, है ना, रीअरेंज दिस थिंग, इट विल बी कमिंग आउट टू बी दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस स्क्वायर. ड्रॉ द ग्राफ. ये हरा मुझे पसंद नहीं आया. चलो, I draw its graph. Can you draw its graph? अच्छा, can you draw A versus graph, A और X का graph? Can you draw it?
Can I draw A versus X graph? It will be like this. A equals to minus omega square X. Say to a linear relation. Linear SHM. This is what it is showing. A equals to minus. A is equals to minus omega square or K by M into X. Now what is V here? Draw the V versus X graph. V is speed. Remember this thing. So it is an equation of ellipse if you say that. If you see here, can I write it as, देखना अच्छे से, V square, ठीक है, यहीं से देख लो ना, यहीं से देख लो, ये 2 से 2 खत्म, V square और ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर X equals to A square. I can write this thing that V square upon omega A का whole square plus X by A का whole square. But the condition is that the velocity cannot be negative. Sorry, speed cannot be negative. So it is a condition of ellipse. So this diagram will be something like this. This position is minus A. This position is A. It is becoming 0. And at mean position, it is omega A. That is the highest. So I can say that the V maximum is equals to omega A at X equals to 0 only. Yes or no? Everyone clear? अरे ठीक है ना भाई? Everyone, from here we are bringing it. It is the basic equation. From this basic equation we have come to this one. अरे F बराबर, sorry, MA बराबर minus KX था ना? तो A बराबर क्या लिखा था हमने? minus K by MX. ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर है. A equals to minus omega square X. From where we have find out the speed. Now I want to find the position. Position in SHM. सर ये कैसे हुआ? V स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर से V स्क्वायर बाई ओमेगा A स्क्वायर, ये वाला कैसे हुआ? क्या वो? कौन सा? हाँ V स्क्वायर, हाँ हाँ नीचे वाला तो एक, ये 2 से 2 खत्म, ये ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस में इधर नेक्स्ट स्टेप उसका नेक्स्ट स्टेप उसको डिवाइड कर दिया ना, तो ओमेगा स्क्वायर का इस पूरे को डिवाइड कर दो ओमेगा स्क्वायर तो किससे डिवाइड किया? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से, तो इधर तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर होगा ना सर? ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर और होगा। हाँ तो नीचे ए बाई ओमेगा होगा, ए स्क्वायर नीचे ए बाई ओमेगा होगा। हाँ और इसका ओमेगा नहीं होगा इसमें। यस, चेंज इट, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर से, so v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या जाएगा फिर इसका? ए बाई ओमेगा तर स्क्वायर, ए बाई ओमेगा का होल स्क्वायर। हाँ, चेंज इट अकॉर्डिंगली। तो x कहां से कहां तक जाएगा? ए ओमेगा है ना? एक्सक्यूज मी सर, सर वो एक्चुअली उससे जो जस्ट पहले वाला इक्वेशन है ना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। उसमें आरएचएस साइड, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा जो आप पहले बताया। ओके, यस, ठीक है, यस। अदरवाइज यहाँ पे तो इक्वेशन की कुछ और आ जाएगी, है ना, वैल्यू, और x की वैल्यू भी माइनस ए बाई ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, यस, माइनस ए टू ए इट विल बी ओमेगा ए।
Done? Everyone? देख लो, I think. Okay, coming to the position of question. Can I write that V is equals to omega put under A? Please calculation check करते चलना. Omega A square खुद से करते चलो notes, right? I already told you, make your own notes, so we will be able to calculate is correct. Dx by dt, it is equal to omega A square minus x square. So we can write it as like this: dx by put under A square minus omega square is equal to omega into dt. Now I am assuming few things. I am assuming the initial condition, although it might be given in your question. T equals to 0, x equals to x naught. This is my initial condition. यही मेरा क्या है? This is my initial condition. Put the value. Put the values. So if you put the values, it will be x naught x from 0 to t. ये कितना आ जाएगा? Sin inverse, बताओ क्या थी इसकी वैल्यू? x by a. x by a. वेरी गुड. ये फॉर्मूला क्लास 12 में पढ़ना है ना? पढ़ना नहीं पढ़ना? is equals to omega t. Now I am writing here, देखो अच्छे से. Sin inverse x by a minus sin inverse x naught by a is omega t. ठीक है, या इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, तो इक्वल्स टू प्लस ओमेगा टी कर सकते हैं. नाउ इफ यू सी हियर, इट इज अ कांस्टेंट. भाई एक्स नॉट की कुछ वैल्यू होगी फाइनल, ए की कुछ वैल्यू होगी, सो इट्स अ कांस्टेंट. दिस इज व्हाट आई कॉल्ड इट एज फाई. दैट इज द phase angle. Initial phase angle, sorry. Phase और angle initial वाला. So अब करो inverse लगा दो. What you can write here? If this is phi, I can write sin inverse x by a is equals to omega t plus phi. आ गया तुम्हारा? X is equals to a sin omega t plus phi. Differentiate it one time, you will get the v. What is v? V is equals to a omega cos omega t plus phi. एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, you will get a is equals to minus a omega square sin omega t plus phi. Can I write it again? Minus omega a square sin क्या है? x है. X. This is what we can do. ठीक है. You can draw the graph also. You can draw the graph. सुनो अच्छे से. How we make the graph? You might be knowing this thing, और हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो. Any graph of sinusoidal, draw it as a sine graph. कुछ मत लिखो, just draw the sine curve. After drawing the curve, then mark it. So ये maximum कहाँ जा सकता है? From a to minus a, then mark the value minus a. ठीक है. What is this time? ये होता था pi by 2. यहाँ क्या हो जाएगा? Pi by 2 omega. This will become pi by omega. This point will become 3 pi by 2 omega. This will become
2 pi by omega. Now you can see here, this is my complete time period. So can I say that the time period from the graph itself, it is coming out to be 2 pi by omega, which is equals to 2 pi m by k. So for ये सब कुछ तुम्हें आता है यार, है ना? T is equals to, that is 2 pi by omega. It is 2 pi 200 m by k for harmonic oscillator. ठीक. This time period depends upon mass as well as spring constant. Yes or no? So only depends only on restoring forces. First thing. Second thing, even if a constant force is applied, it is independent of it. So independent on of constant forces. क्या मतलब है, सुनना अच्छे से. What I am trying to say, let me give you one example for that. Example. First example, I have given you this thing. M. A. You have said that the time period is 200 pi m by k. Now tell me the time period of these things. M. Third, अच्छा, we will be solving numericals from tomorrow. ठीक है, आज जितना भी खत्म हो जाएगा, we will be trying to finish. You will be able to understand कितना पढ़ना होता है इसमें. Fourth and fifth. Theta m and ठीक है, थीटा एक और f लगा है. जो f लग रहा है ना, f इज कांस्टेंट. f इज कांस्टेंट. Tell me the time period of each one of them. भाई इतना टाइम देना चाहिए.
Anyone? कितनों का सेम आ रहा है आंसर? विवाद कर रहा है। So I'm writing. My answer is T is equals to 2 pi under m by same. How many of you are getting the same answer? कितने लोग हो? Good. So here, see, any constant force that is acting here will be managed by the other forces. Only the restoring torque, only the restoring force will have the count in periodic motion. क्यों? मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि हम लोग पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम पर जाते हैं एंड वहां से डिस्प्लेस करते हैं। तो जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हैं तो ऑलरेडी द कांस्टेंट फोर्सेस आर balancing each other. Only force that will react to the displacement of the particle, that will be restoring force. Yes or no, everyone? That will become active only with the small displacement is the restoring force. Yes, no? Have you understood this concept or not? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Chalo. Coming to the energy in a system. Energy in a system. So, can I write that the work done total is equal to change in kinetic energy? What is work done total? What is work done total? वर्क डन काइनेटिक एनर्जी क्या है ये? बचपन में पढ़ा होगा तुमने या बाकी लोगों ने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब अगर कोई मुझे ये आकर बोलता है कि सर ये तो मैकेनिक्स हमने पढ़ाया, ये मैं छूट गया, तो भाई दिस इज ऑल्सो इन योर क्लास 11th। दिस इज द वेरी फंडामेंटल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें आना चाहिए इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड। हियर आल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि t बराबर 2 पाई m by k होता है, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो दैट because it is the very basic of SHM that you have studied in class 11th. So class 11th and 12th basics you have to understand. So what is work done? Work done here is what? It is a conservative system. So can I say that ki work done here is equals to change in potential energy. Let's say kinetic energy is delta T. So can I write that if kinetic energy is equals to T, I am denoting it. So can I write here that delta T plus delta U, you know that thing also. तुम्हें ये भी पता है delta T plus delta U is equals to 0. That is here we are having conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy. Everyone, I hope you know this thing. ठीक है? Conservation of mechanical energy. Can I say that if E is the energy, right? Only the energy is here. That is, can I say that dE by dt will be 0
in SHM? If E is the energy, if E is the total energy, total means kinetic plus potential. If E is the total energy, I can say that it will be zero here. Why it is zero? That means energy is not changing. This is showing that it is non-dissipation of energy by the system. Non-dissipation of energy by the system. Okay? Now tell me, as you all know, that what is my U? What is my U? What is my U, bhai sahab? Anyone? Half kx square. Can I write it? Is equals to half k a square sin square omega t plus 5. पढ़ा है आपने ऊपर? And what is k? t लिख देते हैं. T kind energy. It is half m v square. बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ इंटू, अरे ऊपर निकाला है अभी हमने v की वैल्यू क्या ही थी? ओमेगा स्क्वायर A a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. So it is omega square. आगे क्या था? आगे बताओ. a square a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. माइनस ना, sir cos square omega t plus 5. m भी तो है, हाफ m स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है. व्हाट इज k m ओमेगा स्क्वायर? कैन आई राइट इट k? क्या लिख सकते हैं हम लोग? k m ओमेगा इज व्हाट? k a स्क्वायर cos square omega t plus 5. Add both of them. So then that t plus u is equals to half ka square, or ta plus u, or e half ka square. निकालो. Amplitude is fixed, so dA by de by dt क्या होगा? 0. You can see it from here also. d by dt is equals to 0. Here I can say that de by dt, you can check that it is equals to 0. Let us draw the graph. Let's draw the graph versus x and e, because we have written in terms of x and e. So energy E will be constant. E will be constant. But I can also draw the potential energy. This is my potential energy. देखो, this will be my U. ठीक है. एंड बहुत ही कॉमन सा ग्राफ है, तुम सबको पता है. कॉमन ग्राफ भी नहीं बन रहा ढंग से मेरे से. ठीक है. What this point is? This point is minus a, and this point is a. Right? This energy is what? Half ka square. So, yes, the potential energy is minimum at center, maximum at extreme. Ulta with the. So this is my potential energy, and this is your kinetic energy. I hope you guys know this thing. Acha, if I want to make E versus T graph, if you want to make E versus T graph, बताओ भाई.
Anyone? E versus T graph. So let's start with the potential energy. It is half Ka square sine square omega t. That means its maximum value will be this. Half K square sine square omega t. What is sine square omega t? That it will never go in zero. It will be sinusoidal. So I'm writing like this. कुछ ऐसा ग्राफ होगा. This is of PE, potential energy. Kinetic energy का ग्राफ cos. So cos is something. कुछ है. I hope you guys are understanding this thing. आसान चीज है. This is my kinetic energy. खत्म. So how the energy is changing? How the energy is changing? How the energy is changing? Energy कैसे change कर रहा है? अच्छा, what is the frequency of energy change? What is the frequency of energy change? अरे भाई, what is the frequency of energy change? Omega by 2 pi. Omega by 2 pi. Total energy. हाँ हाँ, total energy. सर Total half of energy. half of simple harmonic frequency का सर. Twice. ऐसे हो रहा है ना? हेलो. हाफ Yes, नहीं. sir. अगर एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, तो ये छोटा वाला ग्राफ क्या है इसका? ट्वाइस है ना फ्रीक्वेंसी इसकी. Yes, sir. So it is twice, not half. Write it down. That frequency of energy change is twice that of oscillation. Is twice that of oscillation. ठीक है. Now let's do the average of energies. ठीक है. टाइम एनर्जी एस्टिमेट करने के बाद टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी. टाइम एवरेज ऑफ. हाँ, सर कैसे ट्वाइस हुआ, फिर से समझा दीजिए. विल प्रूव दिस. पहले ये निकालो टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी. व्हाट इज द टाइम एवरेज ऑफ द एनर्जीज? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसकी पीरियड क्या है? ये सुनो. यस सर. इसकी पीरियड क्या है? ये. यस. सो अगर इसकी पीरियड टी है तो इसकी पीरियड टी बाई 2 है. तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f है. ये सुनो. यस सर. बेटी क्लियर है? यस सर. फाइंड आउट टाइम एवरेज ऑफ एनर्जीज. 1/4 K square. 1/4 के स्क्वायर. भाई साहब, ई एवरेज, फर्स्ट ई एवरेज इज हाफ के स्क्वायर.
It will not change. Yes or no? भाई, will it change or not? Yes. Not changing. भाई कांस्टेंट का क्या ही एवरेज होगा? Coming to T average. So T average, how will we write average? हम लोग लिखेंगे T as a function of into dt upon dt 0 to t. अरे रुक जाओ यार, मैं काइंटिंग में लिख दूँ इसको, के ही लिख देते हैं हम लोग. We will use interchangeably जहाँ जिससे फायदा हो जाए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. So काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेटेड एवरेज के लिए कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ के ई dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर द कंप्लीट टाइम 0 to t कर. तो है क्या यार ये तो है हाफ इंटू के ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी अपॉन टोटल टाइम पीरियड टी. That is half k a square into ये पूरा पूरा 0 to t cos square omega t plus 5 into dt upon t. What is the average of cos square theta? What is the average of cos square theta? 1/2. 1/2. Very good. जिनको नहीं पता है प्लीज सॉल्व इट ऑन योर होम. ठीक है, cos square का इंटीग्रेशन सबको आता है करने, करके देखेंगे हो जाएगा. इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2. इजी इंटीग्रेशन है cos स्क्वायर का, तो इट इज 1/4. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज इज अगेन सेम, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to t हाफ के ए स्क्वायर. क्या था यहाँ पर? भाई सेम, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन सेम ही है अपॉन टोटल टाइम 0 to t. इट इज आल्सो कमिंग आउट टू बी हाफ. ये तो आसान चीज है, कुछ है नहीं. So I can write here that potential energy time average is equals to kinetic energy time average is equals to total energy time average by 2. बहुत ही आसान सा चीज था, कुछ है ही नहीं इसमें. नेक्स्ट डू दी पोजीशन एवरेज. Of energies. By one thing I know, if something is constant, its average will remain same. So E average तो बिना calculate किए हुए I know that it is half k square. Now guys need to do the potential energy. E average. निकालो कितना है?
इतना टाइम मिलना चाहिए। भाई ये तो और भी आसान था। 0 to a हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 0 to a इंटू डी एक्स। सर वही आ रहा है 1/4। नहीं यार 1/4 नहीं आता। के ऊपर क्या जाएगा, x³/3 0 to a, और नीचे क्या जाएगा a। so PE average it is coming out to be 1/6 k²। ये आएगा। Is it coming सबका? How many got this answer? ठीक है, के ही तो निकाल सकते हो माइनस करके भी, बट ऐसे निकाल लो। तो इट इज फ्रॉम 0 to a हाफ mv²। v is what? a omega square x square। Put the values and solve it। omega square x square minus a square into dx was 0 to a into dx। what do you write? m omega square equals to k, बाहर निकाल लो, a से a खत्म। so नीचे वाला भी a है, so half m omega square become a, so only left is 0 to a। you have to integrate x square minus a square into dx। so x³/3 and x/2। this is coming out to be 1/3 ka²। please confirm it। सर वहां पे सर हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर कैसे ए कहाँ से आ गया? ठीक है, नॉट a, हाफ mv² v है। और सर वो अंदर ब्रैकेट में a² माइनस x²। क्या होगा अंदर ब्रैकेट में? a² a minus x²। यस सर। put the value, find it। हाँ यार just check and confirm। so potential energy position average is twice of तो एग्जाम में अगर मैंने इसलिए ये करवाया है, समटाइम्स व्हाट हैपन इन एग्जामिनेशन इट हैज बीन आस्क्ड पोजीशन एवरेज।
सर टॉयज ऑफ पोजीशन एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ना, ट्वाइस ऑफ, ये 1/3 है ना, इसका ट्वाइस आ रहा है ना, उल्टा लिख दिया हमने क्या, हाफ होगा, यस सर। ये हाफ होगा, ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है कर दी। चलो भाई, डन एवरीवन। Next, come to the time period of oscillation. So time period of oscillation using energy method. One is the force method. Time period of oscillation. How to find it? I prefer energy method. Okay. There are two methods. First one is force method that we have already discussed. Force method is what you will find out A. It will be equals to minus omega square x, and time period will be what? 2 pi by omega. This is what you can do. That we have already done. Second method is the energy method. Okay, use this method in the examination. Use this method in the examination. Why? Because we in examination we often write it to be a free oscillation, that is free from dissipation of the energy. No energy will be dissipated here. Okay. Now, if no energy is dissipated here, so understand energy method. Energy method is nothing. Simply, we know that energy is mechanical energy is conserved. So dE by dt is equals to 0. From dE by dt equals to 0, find omega. In both the cases, we have to find omega only, right? And omega, time is what? 2 pi by omega. For example, let me tell you, for harmonic oscillation, for harmonic oscillator, I can write E is equals to half mv square plus half kx square. What will be dE by dt? It will be mv dV by dt. V square 2 से 2 खत्म, it will be 2 से 2 खत्म, so it will be kx into dx by dt. Can I write, and it should be equal to 0. The word dx by dt or v both are same thing. ठीक है? So can I write here, देखना अच्छे से, can I write v common ले लो तो mx double dot, this we are writing double dot, plus k into x is equals to 0. a या फिर इसको a कह लो, तो ma is equals to minus kx, और और a is equals to k by m into x. ठीक है, यहां पर हमने क्या किया था, यहां तक आए थे, ठीक है, और यहां तक हम कैसे आए थे, फोर्स मेथड से आए थे, राइट? फोर्स मेथड इक्विलिब्रियम करके डिस्प्लेस करके हम लोग आए थे। हमने कैसे किया था, फर्स्ट वी हैव डिस्प्लेस्ड, वो लिख दे रहे हैं, displaced by x, then force analysis, and then we have come to this situation. Here we are here, so can you write that omega is equals to under k by m here. If omega you know, you write the time period, it is 2 pi under m by k. What is step followed? Just write the complete energy, nothing more than that. If you are writing the complete energy, everything will be taken care of. ठीक है? Done everyone? Done? अरे yes or no? प्लीज बताओ, हुआ नहीं हुआ? यस सर।
अभी तक जितना भी पढ़ाया है मैंने, everything is there in your class 11 syllabus. This again I am teaching you the spring combination or combination of springs. Combination of springs. First is the series combination. Now, if you remember your old JE days, SHM at least takes 7 to 8 classes. Yes or no? Agree or not? बहुत डिटेल में पढ़ते थे ना SHM. Here, this is only the thing that you have to study. This much depth only we have to cover. Nothing more than that. Okay. So what is series combination? That there will be several springs which are attached to each other. There will be several springs which are attached to each other. Okay. K1, K2, K3. Now, what is happening in series combination? You need to note down first thing that spring is massless. ये मैंने पहले भी लिखवाना था मुझे. And x is very small. Spring is massless. जो अभी तक हमने किया है सारा ना, spring सारा कुछ क्या था, massless था. ठीक है. Now can I write here? सुनना अच्छे से. If spring is massless, that at any point here, I can write. This is my mg. Sir, string is massless and x is very small. होगा वहाँ पे आप massless ही लिखिए दोबारा. X is very small. Sorry. X means overall. So let's say if x is the total elongation here, total displacement is x. So can I say that spring 1 has elongated by x1, spring 2 has elongated by x2, spring 3 has elongated by x3? And can I write that if all the springs are massless, then each forces will balance each other? So I will be writing here, देखना अच्छे से. K1 x1 is equals to K2 x2. From where I am writing? From here I am writing. ऊपर लगेगा K1 x1, नीचे लगेगा K2 x2. Here K2 x2 बराबर K3 x3 and here K3 x3 बराबर mg. So is equals to K3 x3 is equals to mg. Now let us consider it to be a spring and let us find out its K equivalent for the same system, K equivalent. So can I say that it is elongated by x? Let us find out the K equivalent. So I will be writing that K equivalent into x is equals to mg. This is the first equation. This is the second equation from the second x. Can I write K equivalent is equals to x1 plus x2 plus x3 equals to mg? Can I write that K equivalent x1 is what? देखो यहाँ से मैच करो. K1 x1 बराबर mg. So x1 equals to mg by K1, mg by K2. Plus mg by K3 is equals to mg by K equivalent. इसको उधर ले जाते हैं. This is what? mg खत्म. So I can write that K equivalent ये किसकी तरह ऐड हो रहा है, रेजिस्टर की तरह या कैपेसिटर की तरह? रेजिस्टर और कैपेसिटर. कैपेसिटर. Summation I equals to 1 to n 1 by ki.
like capacitor. क्लियर है सबको? आई हैव तो बच्चों वाली चीजें हैं. इवन इफ आई एम सेइंग कि बच्चों वाली चीजें हैं, you can ask. Parallel is more easier. So parallel, if you have this is more easy. If you have mass m here, can I write this complete mass m? If it is k1, it is k2, it is k3. The elongation is same elongation here. Yes or no? Elongation will be same. So k equivalent is equals to summation 1 to n ki. खत्म. पैरेलल में कुछ करना ही नहीं है. आई होप अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. समझ में आया सबको ना कि k1x प्लस k2x प्लस k3x इक्वल्स टू mg. x कॉमन लोगे तो k इक्वल बराबर क्या आएगा? k1 k2 प्लस k3. यस नो एवरीवन? यस सर. ये सब चीज बहुत आसान है ना? तो आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम हेयर. जहां मुझे लगता है जरूरत है. नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम. अगेन यू नो दीज थिंग्स, but it's my duty to write all the things जो भी required है. What is simple pendulum? Nothing. This like this thing. From a rigid support above, a length is there, a bob is there, and this bob will be moving across it. So let's say at any point of time, this bob is here. So what all forces will acting on it? The force acting on it will be here tension, and here mg. Now you have to understand which component will be bringing back. अरे ये अगर इधर जा रहा है तो someone is bringing back, yes or no? And that restoring force will count in our scenario. So let's say if this is theta and if theta is very small, ठीक है? So this position is x and this is L, ठीक है? So can I say that here the force that is acting here that will be restoring in nature will be equal to what? Although you can do it by torque also, ठीक है? You can do it by torque also, but as theta is small, let's analyze the force only. Force and torque will be almost same. So force restoring will be almost equal to what? Minus mg sin theta. This will be the restoring force that will be bringing it. अरे mg का दो कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट एक इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? It will be mg sin theta f that I'm talking about. It will be almost equals to minus mg theta. Why? Because it is very small. Can I say that if theta is very small, I can write that ma f equals to ma is almost equals to minus mg. What is theta? Theta is x by l. X by l. So from here you will get that a is equals to minus m से m खत्म g by l into x. तो भाई ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया तुम्हारा? रूट अंडर जी बाई एल. और टाइम पीरियड तुमने पढ़ रखा होगा बचपन से. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज t equals to 2 pi root under l by g. Only this thing you have to remember. ये तुम्हें याद रखना चाहिए. Time period of simple pendulum, it is a very very basic fact. Very basic fact. Although I have written down the formula only, but I have shown you the simple calculation. Everyone know this now? सबको पता है ना ये चीज? Yes, sir. अगर तो पूछ लेना. This is very basic. Now come to the next pendulum, that is compound pendulum. Compound pendulum. Compound pendulum is nothing, but it is a rigid body which is doing the motion. So let's say if we have a rigid body here, and let's say
वी हिंस्ड हियर, हमने यहां इसको हिंस्ड कर दिया। तो इसके नीचे अगर सेंटर ऑफ मास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई? बिकॉज mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बट what will happen if we displaces it? Right there, if we displace by theta, अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दे थीटा से, सो व्हाट विल हैपन? सो ये फिगर वही है, ठीक है। फिगर ही कैसे बनेगा, ठीक है, मान लो। नाउ आई हैव डिस्प्लेसेस दिस, नाउ दिस इज माय सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वही है, मैंने इसको बस डिस्प्लेस कर दिया है सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा हियर। अब नाउ mg will act and mg will try to rotate that body, restore that body. Yes or no? So there will be a restoring torque will be acting here, and which will be equals to, restoring torque will be equals to minus mg into this distance. So let's say this distance is given as L. So R cross F, RF sin theta. So mgl sin theta. Please raise your hand if you know this torque work वाला चीज सब। Yes, no, everyone? अरे torque is R cross F, RF sin theta. Yes or no? यस सर। भाई पता नहीं पता सबको? यस 11वीं की बेसिक हो जाए, torque बराबर R cross F minus mgl sin theta, which can be written as mgl theta. Why? Because theta is very small. This is our assumption, small displacement only. So can I write that alpha will now be equals to minus mgl theta by I. Why? Because we know that torque is equals to I alpha. Right? Torque is equals to I alpha. Put the value. Are you getting something? What is omega square now? So omega square is equals to mgl by. So can I say that for a compound pendulum, time period will be 2 pi root under m into g into l by I. Tomorrow we will be solving numerical on these also. ठीक है, एक एक numerical मैं सबकी करवा दूंगा, ठीक है। So you will be able to understand this thing. So these are basics. Again, these are not directly mentioned in the UPSC syllabus, but these are so basics from the part of SHM that you should knowing it. हाँ बोलो। I by mgl होगा। फाइनल एक्सप्रेशन में 2 पाई ओमेगा। 2/5। यार कलर करने से पहले बताया करो। चलो, got it everyone? देखो what is happening, सुनना अच्छे से। I might not discuss these cases with you, so these cases can become a question. अरे मैं तो ये डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, ये एसएम का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एसएम इज गिवन इन योर सिलेबस, यस और नो? बट वंस यू नो दिस फॉर्मूला बिफोर हैंड, you will be able to apply, you will be able to apply in the examination or in the question. Next one is torsional pendulum. Not torsional pendulum is just like twisting pendulum, and it is used to find moment of inertia. ये moment of inertia निकालने के लिए यूज होता है। You know moment of inertia, mass distribution about an axis. Also it is used in galvanometer. जहां पढ़ेंगे वहां बता दूंगा तुम्हें, गैल्वेनोमीटर में बता दूंगा। For deflection, ठीक है। Whenever there is a meter, we can use this torsional pendulum. So what is happening in torsional pendulum? That
Again, torsion, you will be studying in stress and strain, the torsion, if you have studied, अच्छी बात है ना? If it is a disc, let's say, or any shape, let's say disc or any shape, any object is there, and if we start rotating it, so what will happen in this rassi? This rassi will start twisting. When it start twisting, what will happen? It will have restoring tendency will come here. Again, मैं तुम लोग बताता हूँ. Some of you might be knowing it, right? Same example, that if you have a, let's say, a cloth here, right? And two persons are standing here, and if you want to squeeze out all the water from here, so क्या करते हो? कपड़ा सुखाने टाइम पे इसको मोड़ना स्टार्ट करते हो. एक आदमी पकड़ता है, दूसरा आदमी इसको मोड़ना स्टार्ट करता है, so that water will fall out, है ना? So when you इसको मोड़ते हो, so what will happen? When you release it, ये उल्टी डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, right? So if रस्सी is there, if a rope is there, and when you twist it, तो रस्सी ट्विस्ट तो हो जाएगी, बट जैसे ही इसको तुम छोड़ोगे वो उल्टी डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी. दैट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, and that restoring torque is given by minus c theta. How it is minus c theta? You will be studying in stress and strain. Some of you might have studied, some of you will be studying later. Okay, so torque equals to minus c theta, where c is the parameter. It is a geometrical parameter. So can I write t equals to I alpha? So alpha equals to what? Minus c by I theta. So here, what will be time period? Time period will be 2 pi root under I by c. 2 pi root under I by c. Two pi under I by c. Check it. Understood, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So we don't have time to start Dand oscillation. So let's do one numerical. This is the last numerical that we are doing today. And this question I like the most. और मैं बहुत साल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कभी तो यूपीएससी पूछ दे. दिस इज सो बेसिक. अ स्प्रिंग ऑफ, तुम लोग पढ़ के भी बोलेगा हाँ ये तो बेसिक है, ये तो आ सकता है कभी भी. इट्स वेरी बेसिक. A spring, uniform spring of constant K and a finite mass M is loaded with a mass M. Now spring is not massless here. Spring has mass M. If M is not negligible, to mass M, find the time period of oscillation. How many of you think that it can come anytime in the examination? It's so basic question. We have assumed spring to be a massless, and if it will be have mass, what will be the oscillation? Do you think it is a basic question? Yes or no? नहीं लगता? सर रियल लाइफ क्वेश्चन है सर. It's a basic question. Yes, sir. I'm expecting it from very बहुत टाइम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए. This time आया, you will be in a very very good position. Trust me. How we will be doing the time period? Again, if I talk about answer writing, you will be having the long session. Those who have joined late, please understand thing. Long session means live answer writing and numerical session. We have already conducted this answer writing session wala part. Okay, I will be adding you in this batch. Please watch that answer writing session. Okay, from August, after August, we will be resuming these sessions. Okay, but till now, if you're understanding that there will be an introduction, there will be the body, and there will be the conclusion. Introduction of this answer will be what?
Definition of HM, yes or no? Yes or no? भाइयों, बाकी लोगों, can you write definition of HM in introduction? Yes or no? Yes, sir. And then we will solve. ठीक है, तो solution देखते हैं हम लोग. So try it. Just tell me, does everyone is doing the same thing? That okay, it is a free oscillation. So free oscillation simply means that dE by dt is 0. dE by dt is 0. सब चीजों को ध्यान रखो. And first thing that this should be in your mind. Second thing, किसको डिस्प्लेस करेंगे, स्प्रिंग को या मास को? कौन ऑसिलेट करेगा? Displace m by x. This x will oscillate. Whether the spring has mass or not, it doesn't mean that कि तुम स्प्रिंग को वैल्यू करोगे. Always the mass attached to it. Yes, I understand that this spring has some mass. इसके पास कुछ लेंथ है, ठीक है भाई, है ना? और इसके इसकी है, सब कुछ ठीक है. इससे मास m लोडेड है. So which you will be displacing? You will be displacing this m by x, and this x will oscillate. इतना बेसिक याद होना चाहिए जो हमने पढ़ा है. अब सॉल्यूशन करो. It's a good question. Even if you're not able to solve it, कोई बात नहीं है. चुन्नू मुन्नू सवाल भी करेंगे हम लोग कल, है ना? अच्छा, will all the spring will displace by x, or different parts of spring have different displacement? हाँ भाई, चलो, इट इज अ टफ क्वेश्चन, डोंट वरी. मुझे बस ये क्वेश्चन करवाना था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ डिफरेंट यू. होगा सर. डिफरेंट होगा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई नो, इवन इफ इट कम इन एग्जाम्स, इट विल बी अ टफ क्वेश्चन, ट्रस्ट मी. मुझे करवाना है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. सो इफ इट डिस्प्लेसेस बाय x, जस्ट टेल मी, displacement of this portion of spring will be x, but displacement of this portion of spring will be 0. Yes or no? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. So I am writing, but ध्यान देना और please try to respond करना. So इस point की जो displacement होगी वो x होगी, और इस point की जो displacement होगी वो होगी 0. So what we will be doing now, हम क्या करेंगे, ऊपर से y पर जाकर एक एलिमेंट ले लेंगे dy. ठीक है? इस dy में we will have mass dm. इस dy की मास कितनी होगी? dm मास होगी. ठीक है? एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? यहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इट विल बी y by l into x from the linear relation. समझो अच्छे से, y by l into x, यही तो होगा. when x is 0, displacement is 0. सॉरी, x तो कांस्टेंट है इसके लिए, है ना? x तो ये डिस्प्लेस कर रहा है. फॉर स्प्रिंग x is constant. So y by l, understand this thing, y by l, when y is 0, displacement is 0. when y is l, l से l खत्म, displacement is x.
अग्री और नॉट एवरीवन? यहां तक सब लोग अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कि वाई पर जाकर एक डीवाई एलिमेंट लिया, उस डीवाई का मास डीएम होगा, ठीक है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट वाई बाई एल इंटू एक्स होगी. एवरी पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग विल डिस्प्लेस एट अ डिफरेंट लेंथ. यस और नो एवरीवन, अग्री और नॉट? यस सर. सर सर ये वाई बाई एल इंटू एक्स कैसे आया वो नहीं समझ। क्या बोल रहे हो? ये सर लीनियर कैसे मानेंगे सर? क्योंकि the force acting is minus kx by the spring. The elongation of the spring varies in linear fashion. ठीक है, जैसे तुम्हारा एक स्प्रिंग है, तुम इसको अगर खींचोगे तो जो पोर्शन तुम्हारे पास होगा वो सबसे ज्यादा खींचेगा, ये वाला जीरो खींचेगा, और बाकी सब उस तरीके से खींचेंगे जितनी इसकी डिस्टेंस है. जितनी दूर डिस्टेंस है इससे उतनी ज्यादा खींचती है स्प्रिंग. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट K1/L वाला प्रॉपर्टी. ठीक है, so this will be displacement. That's why I'm telling you कि I'm not expecting this question to be solved by you guys. मैं मान रहा था कि नहीं होगा. ठीक है, have you understood this or not? ठीक है, यस सर. please try to understand this is a way of solving the thing. ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है as such. This is the only thing to understand that कि spring has a property which varies linearly. ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अच्छा अगर x अगर l डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है x, तो एक में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी x/l, तो y में कितनी हो जाएगी x/l इंटू x y. वही चीज लिखा है हमने यहाँ पर. यूनिटरी मेथड, क्लियर और नॉट? यस सर. ठीक है, एंड व्हाई वी आर राइटिंग इट दैट द डिस्प्लेसमेंट वेरीज linearly. Either you can write assuming this or you can simply state this thing. We know that स्प्रिंग में ऐसा होता है. So what is the velocity of the element? The velocity of the element, can I write it? It will be d into displacement कितनी है इसकी? It is y by l into dx by dt. Can I write y by l into dx by dt? y by l into dx by dt, because this x may be changing. y तो भी हमने फिक्स कर रखा है कि at of y. Let's understand this thing. So kinetic energy of spring देखना अच्छे से, very important. Kinetic energy of spring, it will be integration half into dm into v of element square. बताओ मुझे क्या आएगा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. यहाँ लिख देते हैं हम लोग. बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, it will be integration half of what is dm? dm is m by l into di. यही तो है, यूनिफॉर्मली मानते हैं हम लोग, है ना. सो व्हाट विल बी मास पर यूनिट लेंथ? लेंथ l है, मास m है, m by l into dy. व्हाट इज v स्क्वायर? ऊपर देखो पढ़ा हमने, y स्क्वायर बाई l स्क्वायर इंटू dx by dt का होल स्क्वायर. नाउ फॉर द एलिमेंट वी आर गोइंग फ्रॉम 0 to l काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट ऑल थिंग्स विल बी टेकन आउटसाइड? बताओ क्या क्या आएगा बाहर? हाफ बाहर आ जाएगा, m बाहर आ गया, l कितना आएगा? l क्यूब बाहर आ जाएगा, dx by dt का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एंड अंदर हो जाएगा 0 to l y square dy. Now integrated, it will be half ml cube dx by dt का होल स्क्वायर इंटू l क्यूब बाई 3. l क्यूब से l क्यूब खत्म, यहाँ गया 3. So can I write it as it is 1/6 m into dx by dt का होल स्क्वायर. Now tell me what will be the energy? Total energy will be kinetic energy of mass, that is half into m, capital M, dx by dt. यही तो होगी उसकी v का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m by 3 स्प्रिंग की एनर्जी dx by dt का होल स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर. अरे यस और नो? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टूड टिल नाउ. यहां तक आ गया है तो बताओ, देन वी विल गो एंड फर्दर सॉल्व इट. एवरीवन
Everyone, chalo. Now do the de by dt. देखो मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया है. I might also take this as a topic. ले सकता है टॉपिक को, जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम ले लिया था वैसे ही मास वाला. सो कंसिडर इट टू बी अ टॉपिक ओनली. ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन. तो कल कितना आएगा, ऊपर वाला कितना आ जाएगा? सो इट विल बी हाफ इंटू, ये इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं हम लोग. हाफ m/m3 कॉमन आ जाएगा. सो हाफ इंटू m+m/3 इंटू dx/dt का होल स्क्वायर. कर सकते हैं हम लोग, एक स्टेप और लिख ही लो ना. प्लस हाफ के स्क्वायर. नॉट डू दी dy/dt. अब इसको करो. So I can write simply, it will be half into m+m/3 into 2 into dx/dt into d square x upon dt square plus half into k into 2x dx/dt equals to 0. So dx/dt I am taking as common. ठीक है, हाफ भी कॉमन ले लो. It will be m+m/3 d square x upon dt square plus kx equals to 0. So can I write here that d square x upon dt square, यही तो a है हमारा, is equals to minus k upon m+m/3 into x. यही तो हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर. If this is my omega square, can I write time period will be 2 pi root under m+m/3 upon k. Yes or no? Yes, sir. First case, when m is much greater than m, then time period will be equals to what? बताओ. 2 pi root under m/k. इसको इग्नोर कर देंगे. अगर m बहुत बड़ा है m से, तो m बहुत बड़ा होगा m/3 से. Yes or no? Yes, sir. हम लोग देखो तो प्रूव भी कर दूंगा मैं. t is equal to 2 pi, nothing much, m into 1 plus m/3m. अरे इट्स अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, डू नॉट कंसीडर इट टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एसएम. ठीक है, it is 2 pi under m/3. Second case, what it can be happen when m is much less than m, what will be t? t will be 2 pi. अब ले लो तो रूट अंडर m कॉमन ले लेंगे, है ना. तो इट विल बी m upon m plus 3 upon k. It is a high mass spring, so this will be equals to 0. So what will be the answer here? 2 pi under m/3k. Remember these things. ठीक है, this is what I expect. This is the interpretation. This is the interpretation. So when you will be starting the when we will start our test series, है ना, जो तुम लोग already enroll हो, है ना. So when I write something, please interpret the answer. This is what I mean. That if you got this answer, what else you can tell me about this answer? ठीक है, what are the conditions that you can put here and find the answer? Have you understood, everyone? Everyone understood or not? Please
रिवाइज योर नोट्स जो भी पढ़ाया है, and we have finished this topic. Simple harmonic motion, we have finished it. Tomorrow we will be starting with damped oscillation. ठीक है, damped and forced oscillation. So most probably, please solve it, everyone. सर एक बार सिर्फ जब इंटीग्रेशन में अपन ने हाफ dm v ऑफ एलिमेंट स्क्वायर डाला है तो वहां से dx बाय dt कॉमन निकाल लिया है। कि हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, अच्छा सर, तो इंटीग्रेट करें y ना, y चेंज कर रहा है तो वहां पे तो dx कांस्टेंट मानेंगे उस टाइम पे। वैसे तो चेंज हो ही रहा होगा ना सर? ऐसे ओवरऑल चेंज हो रहा है, बट उस इंस्टेंट पे जब उसकी डिस्प्लेसमेंट x है तब के लिए वो कांस्टेंट है। हाँ प्लीज रिवाइज ऑल योर नोट्स, जो भी पढ़ाया है आज स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। Giving you 3 minutes. We will be spending almost 5 lectures, ठीक है, on the waves and oscillations, ठीक है, almost 5 lectures, 4 to 5 lectures, ठीक है, and these 4 to 5 lectures are very very important, very 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 important, please trust me guys, बहुत ज्यादा important है ये, ठीक है, तो please not miss it in any case, otherwise if you start studying it from the books it will take a lot of time. Simple harmonic motion will not be covered in 3 hours if you start from any book, and whatever we have done it is done, मतलब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। few questions I will be also solving, ठीक है। तो पेज नंबर 1 2 3, everyone understood all the points? Yes, no? भाई raise your hand if you understood all the points जो भी आज हमने पढ़ाया है। ठीक है, good. What you have to do now? What you have to do now? What you have to do now? Revise it at least twice before tomorrow. Tomorrow you have class now. Today is Thursday. Yes, tomorrow you have class. Same time, 1 p.m. So please revise it very carefully because tomorrow class is very important. अगर तुम्हें damped oscillation और forced oscillation में दिक्कत आती है, ठीक है, so I will try to teach it as easy as possible, जितना easy हो सकता है मैं I will try to do that. ठीक है, चलो, that's all for today. We'll meet tomorrow at the same time. Thank you everyone. Bye bye. सर आज का नोट्स भेज दीजिए सर। जी हाँ सर। अभी भेज रहा हूँ। Okay, bye everyone.